as a diplomat, क्या आपका हमेशा से ख्वाब था डिप्लोमेट बनना? Destroy the mosque, destroy the temple. Do not destroy the heart of a man, because this is where God resides. मॉरिशस और पाकिस्तान के bilateral trade where we stand. My interest was in politics. मैं पॉलिटिकल कैंडिडेट भी रह चुका हूँ जनरल इलेक्शन। ऐसे कौन से एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जिस पे यू थिंक कि पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है इन मॉरिशस, एंड मॉरिशस के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, सर्विसेज हैं which can create opportunity in Pakistan? Mauritius is a small island, but Mauritius is a very big state. Okay. Mauritius is an ocean state. Okay. Mauritius का exclusive economic zone बहुत बड़ा है. It's huge. अगर आपको गुस्सा आता है, so how do you manage it? A, B, stress होता है, how do you manage it? I'm a big fan of Kishore Kumar. Oh my God, yes. I'm a huge fan of Kishore Kumar. What is success to you? Success क्या है? कामयाबी किसे कहते हैं? गुस्सा और anxiety को to manage that मैं गाना गाता हूँ. Oh my God. मैं म्यूजिक सुनता हूँ. कोई ऐसा मैसेज ऑफ होप, उम्मीद की कोई अगर बात आप हमारे यूथ को करें और बिजनेस कम्युनिटी को भी? Mauritius is a welfare state. वहाँ पर health services is free for any treatment, even for operations it's free. पाकिस्तान कैसे रोल प्ले कर सकता है अपना, या मॉरिशस कैसे रोल प्ले करता है टू एनहांस इन्वेस्टमेंट फॉर पाकिस्तानीज एंड अगेन फॉर द मॉरिशस, कि इन्वेस्टर्स आए, अपॉर्चुनिटीज आए लोगों के लिए? तो पाकिस्तान में तो सब है, समंदर है, बीचेस है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, वादियां है, स्विट्जरलैंड लाइक द नॉर्दर्न एरिया. Hello and welcome. I'm Shafa Khalid and this is the Coffee with Diplomat by CEO Club Pakistan, a podcast series where we invite the ambassadors, high commissioners, charge d'affaires to talk about the success stories of their countries and to explore the engagement with Pakistan in particularly the areas of trade, investment, education, tourism, culture and bilateral cooperation. So today I am joined by someone जिनको उर्दू आती है, right? So we'll try to do it in a bilingual. उनका नाम, he is the High Commissioner of the Republic of Mauritius, Mr. Munsoo Kurrimbaccus. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम. How are you? I'm good. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आपको उर्दू आती है. We'll try to do it in a bilingual. So सबसे पहले before we start मुझे थोड़ा सा बताएं कि डिप्लोमेसी एज ए डिप्लोमेट, क्या आपका हमेशा से ख्वाब था डिप्लोमेट बनना या नहीं? एक बात. एंड सेकेंडली, हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस आप हैं पाकिस्तान, राइट? सो कैसा रहा है सफर अभी तक का आपका? पहली बात तो डिप्लोमेट, आई नेवर थॉट आई वुड बी ए डिप्लोमेट बिकॉज मैं बेसिकली एकेडमिक से हूँ, एजुकेशन सेक्टर से हूँ. आई हैव बीन ट्रेड यूनियनिस्ट, वेरी वोकल. माय इंटरेस्ट वाज इन पॉलिटिक्स. मैं पॉलिटिकल कैंडिडेट भी रह चुका हूँ जनरल इलेक्शन में. तो पिछले साल जब जनरल इलेक्शन आया था तो हम एक बहुत बड़े अलायंस में थे, तो टिकट का मसला था क्योंकि अलायंस तो बहुत बड़ा था. तो आई सैक्रिफाइस्ड माय टिकट फॉर अ लेडी बिकॉज देयर वाज लेस लेडीज इन दी. तो मुझे appointed किया गया यहाँ पर as High Commissioner. So therefore, I'm a political nominee. Yeah, and this is my first experience as a diplomat, which I'm enjoying. Okay. I'm a fast learner. मैं बहुत जल्द सीख लेता हूँ. और being a person that has been very vibrant, लोगों से मिलना, people to people ties has always been my field, my domain. I've been very active during my youth with NGOs, youth organizations. I've been talking in numerous conferences, youth dialogues, or I'm a person that worked in the youth development agenda. तो मेरे लिए ये people to people connection is within myself. तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है. हाँ. अच्छा. So sir, being the High Commissioner, so आपके ख्याल में अभी as of now, because the world is changing, we have seen so many conflicts अगर देखा जाए दुनिया में आए में, तो अभी मॉरिशस और पाकिस्तान के bilateral trade where we stand? देखें, of course, the world is changing. There are so much dynamics, geopolitical issues. We have wars, we have everything. We have
so many issues, inflation, but we have to move towards the modern diplomacy. And modern diplomacy means dialogue. Those who can relate, those who can stand up and talk in high stakes meetings and make voice heard. Diplomacy today is about bringing peace. And if there is peace in the world, I think बहुत कुछ अच्छा अपने आप हो जाता है अपने आप और तो आई गेस वो चीज सच जाती है एवरीथिंग so modern diplomacy is about dialogue, is about people to people ties, is about cultural diplomacy, is about more of course हम तो trade, bilateral trade, business ये सब तो होता रहता है मगर most importantly is the human factor. That's true. अच्छा सर जो bilateral relations है मॉरिशस के और पाकिस्तान के आई एम श्योर इसका बहुत मेजर एक पोटेंशियल है अगर देखा जाए इन दोनों मुल्कों के ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में एंड रिलेशंस में. सो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से हमें स्टेप्स लेने चाहिए टू एनहांस इट मोर और ज़्यादा बेहतर हो जाए सो दैट पीपल कैन नो कि अच्छा यार देयर इज दिस कंट्री जहाँ पे हमें जाना चाहिए बिकॉज अभी आई गेस मैं देखती हूँ कि लोगों को इतनी प्रायोरिटी प्रेफरेंस नहीं है. दे डोंट नो मॉरिशस अगर देखा जाए राइट. सो एज अ हाई कमिश्नर आपके माइंड में क्या वो की एरियाज हैं या फिर क्या इनिशिएटिव्स हैं यू थिंक यार मुझे लेके आने हैं सो दैट मैं यहाँ पे आऊँ तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू लीव अ लेगेसी ना. जी क्या है ये? तो आपने बहुत अच्छा अल्फाज जो पिछले अल्फाज लेगेसी, वांट टू लीव अ लेगेसी. मैं whatever I want, I leave a footprint. और मेरा ख्याल ये है कि मैं यहाँ पर जब तक रहूँ और जब वापस जाऊँ तो एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ. तो I have my idea how to leave an impact on Pakistan, about Mauritius. हमारा डिप्लोमेटिक टाइज बहुत पुरानी है 1970s मगर जब मैं यहाँ आया तो बहुत लोग नहीं जानते हैं मॉरिशस, मलेशिया, मोरक्को, मराकेश वो गेट कंफ्यूज वो मॉरिशस कहाँ है. बहुत से लोग जानते भी हैं क्योंकि बहुत से लोग वहाँ जाते हैं मगर the majority of people don't know about Mauritius. The highly learned people they do know because Mauritius is a premium tourist destination. It is a high-end tourist destination. It's a very beautiful country. So we have to promote. I have my idea. कुछ बड़ा करना है जो कि लाइमलाइट में आए कि दिस इज बिगर इम्पैक्ट. मगर इसके लिए मुझे सपोर्ट वगैरह की ज़रूरी है. जो मैं कर रहा हूँ इट विल नॉट कम इमीडिएटली. आई हैव टू मेक माई वे एंड जगह बनानी है. तो जगह बनानी है और जगह बनाना चाहता हूँ और ये इम्पैक्ट छोड़ना चाहता हूँ. जबरदस्त. अच्छा सर, बीइंग द हाई कमिश्नर अब यू हैव सीन द मार्केट एंड यू सेड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव बीन बीइंग द डिप्लोमेट अगर देखा जाए यहाँ पे. सो आपके ख्याल में ऐसे कौन से एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जिस पे यू थिंक कि पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है इन मॉरिशस एंड मॉरिशस के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, सर्विसेज हैं व्हिच कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान? कल मेरी मीटिंग हुई एडिशनल सेक्रेटरी से और उन्होंने दो बहुत अहम बात की. उसने कहा कि पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम मॉरिशस ऑन फ्री इश्यूज. Your literacy rate is so high, and Pakistan is the population of Pakistan is a youthful population. Okay, therefore we have to learn from Mauritius how to achieve that literacy rate. Okay. हालांकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम और टर्शियरी एजुकेशन इज वेरी हाई लेवल. आई विजिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, आई हैड इंटरैक्शंस. वहाँ पर स्टूडेंट से बात भी हुई, एक्सचेंज भी हुई. एज ए स्पीकर टुमारो आई हैव टू गो टू कायदे आज़म फॉर ए स्पीच. तो ये सब हो रहा है मगर at the lower level of the education system, I think that Mauritius has something to contribute. Okay. This is first. Second, in universal, health services, Mauritius is a welfare state. वहाँ पर health services is free
for any treatment. Even for operations, it's free. If the service is not available in Mauritius, government sponsors for you to go to India to other countries to get your treatment. Okay. Now, Pakistan is quite advanced. For example, we have a group of ophthalmologists, Al-Shifa Trust, Dr. Wajid Ali Khan और उसकी टीम वो मॉरिशस लगातार 18 साल से जा रहे हैं, and they give free services to cornea transplant. तो ये सब इन सब issues में पाकिस्तान आगे है, मगर on the universal health service, Mauritius has something to offer because we provide free health services. This is the second sector. I believe the third sector, and I'm a bit surprised that Pakistan should be among the leading countries in terms of tourism intake, tourism coming, because Pakistan में तो सब है, समंदर है, beaches है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, वादियाँ है, Switzerland like the northern area, मैं जाना चाहता हूँ, I want to explore. तो ये सब you have different weather within the same country in Pakistan. So Pakistan is a place to explore. I believe that we in Mauritius, we have something to offer in the domain of tourism. Because tourism, we have developed tourism since a long time, and we have an expertise, and maybe we have the best training center in tourism in Mauritius, because people even from Africa come to Mauritius for courses and for training. So we have to offer. You have a lot to offer then, obviously, because I've never seen training courses ke liye come to Mauritius, But at the same time, we have also to learn from Pakistan in the domain of ICT, for example, AI, बहुत आगे, in the field of weather forecasting, disaster management, और ये सब में I think we've experienced, आप लोगों ने या पाकिस्तान ने बहुत कुछ achieve किया है. So we have to learn from Pakistan in these areas, in these fields. There is also the field of small and medium enterprise. Mauritius small market. The medium and small and medium enterprise they are having issues to get a market, but Pakistan has a population that is Punjab has 125 million people. You can imagine Mauritius, तो Islamabad में Mauritius से ज़्यादा population है. तो इस field में, but the investment that has been made in Punjab on small and medium enterprise, the facilitation that has been given to entrepreneurs so that they start their startups. This, I believe, we have to learn something from Pakistan, and I believe that an agreement between this MEDA here and Mauritius can contribute positively in. ऐसे तो बहुत सारे fields हैं, जैसे कि cultural diplomacy. We have a lot of similar cultures, even the language. We have also to promote Urdu as a language. So we can have the contribution of Pakistan in this field for scholarships and for all that. So दोनों तरफ there is a great potential. There is a great potential. दोनों तरफ. And we have to identify. हमें identify करके. Yes. There is a very हम कर सकते हैं. It's I guess it's achievable. In other words, we can say that. It's achievable. अच्छा, sir, Mauritius की जो strategic location है, it's right in the Indian Ocean, right? And Pakistan का आपको पता है, over the years they are very focusing on blue economy. उनका बड़ा focus है. तो आपके ख्याल में जो हमारा आ सकता है maritime trade है, fisheries है, logistics हैं, या आपकी water या ocean sustainability, उसके ऊपर what is your take on that? Mauritius is a small island, but Mauritius is a very big state. Mauritius is an ocean state. Mauritius का exclusive
economic zone बहुत बड़ा है. It's huge. It's huge in Indian Ocean. It takes just below Seychelles, Maldives, and Chagos is our territory, and you can imagine the huge territory that Mauritius has in its exclusive economic zone. And I believe, Mauritius, we have a success story because we started as a monocrop industry, then we moved towards tourism, then we moved towards manufacturing industries, we moved towards services, now ICT, financial services, and we have a small economy, so we have to move again forward, because Mauritius is also a high spending country with its welfare state. Okay, free education, free health services. This is a huge achievement. और बहुत से मुल्क हमसे पूछते हैं कि आप यार ऐसे करते कैसे हैं? तो we have to always innovate and move towards sectors that are emerging. तो इसमें blue economy एक sectors है that Mauritius is working on. Okay, we have a Ministry of Fisheries and Blue Economy now. So we are working. I believe that proposal आया है Professor Chaudhry से Comstech. He wants to organize an international conference on blue economy, और हमने proposal भेज दिया है. कल हमने भेजा है Mauritius. Let's hope that this can go through. I believe that in blue economy we have the ocean, and you have the expertise, so we can bridge you can bridge. Yeah. So Mauritius basically, again, bridge से बात करूँगी कि Mauritius serves as a bridge between Africa and Asia, right? So Pakistan, what do you say कि पाकिस्तान कैसे role play कर सकता है अपना, या Mauritius कैसे role play करता है to enhance investment for Pakistanis and again for the Mauritius, कि investors आए, opportunities आए लोगों के लिए, तो what is your take on that? देखिए, I believe that Pakistan has a huge diaspora in Africa. Okay, I've been traveling in Africa and I've met Pakistan across Africa, be it Zambia, Zimbabwe, huge population of Pakistani. South Africa, a lot. The business community in Pretoria, Johannesburg, even Cape Town, Durban is a huge diaspora, very huge diaspora of Pakistanis. But then when it comes to investment, maybe Mauritius can play a role of a gateway towards Africa, because Mauritius is part of Africa. Mauritius is an influential member of the AU and the SADC, the Southern African Development Community. Therefore, Mauritius may play, but we have to develop that kind of relationship and bilateral cooperation that can facilitate Mauritius to be the gateway for Pakistani investors towards Africa. Okay, so Mauritius play a very major role in tourism. So we have like ecotourism, we have culture tourism, so luxury travel. So where do you see potential maximum kahan pe hai? Maximum potential, I think, in tourism itself, because I have seen that Pakistan has a niche market of high spenders. Okay, so we Mauritius, we have to explore that niche market. Not everybody would, because I've been engaging with people. Mauritius is quite far, meaning that there is no direct flight. If there is a direct flight, it would be 6 hours travel. But now it becomes 12 hours, even more, because you have to stop over and very long waiting time in Dubai. And from Dubai, it's 6 hours direct flight. So, but a direct flight is also not feasible, because it's a business, traveling. It's a business. You cannot travel with 25, 50 people in a plane weekly. So in this field, I believe that if we can explore that niche market and we have frequent travelers and big in numbers,
there is a possibility to have an airline, but I don't see that in the near future. Okay. So let's start by exploring and exploiting that niche market that can visit Mauritius first, and then let's see how it works and how it goes from and there. how it goes from there. Okay, so ये तो हो गया tourism. We have seen investment, like we have seen travel. So what about the education? कि are there any like student exchange programs हैं जहाँ पे people can go, बच्चे वहाँ पे जाकर program कर सकते हैं? कोई ऐसे initiatives हैं specifically in the field of education जो आप अपने tenure में करना चाह रहे हैं? जी, we have a number of scholarships that Pakistan offers to Mauritius. Okay. पहले तो 16 था, फिर 8 हो गया, फिर 4, अभी 6, 7, 8. I think it's 8. So around it was 8. this and it was like down. Down, and now you are and you're going it's to. going. Inshallah. Okay. I've been in conversation with a number of universities that wish to have that kind of exchange program. Yes. Let's say, दुआ करें कि ये मेरे mandate में हो जाए, Inshallah. that this exchange program comes a reality. But I'm working on that. I'm working on You're that. working on it. Okay. Yeah. So, as we mentioned, कि diplomacy, you said कि it's more of like कि आपको उधर जाओ and you have to one-to-one. It's a communication. You have to go and you have to gel in, right? So, with this, जो आजकल की दुनिया में we have seen so many conflicts अगर देखा जाए तो उसके बारे में and the minute when you were there and आपको एक seat दी and you wanted to go for that but obviously you left it अगर देखा जाए so उस टाइम में और अब टाइम में अगर देखा जाए डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट ये ओवरऑल इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा हुआ है इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव Every era has his own challenges and problems, and we are in an era of AI. Yeah. And you see, even warfare has changed. The pattern of warfare has changed. Today, you don't send millions of troops to a country. So you attack from your home base. So warfare is changing. AI is changing a lot of things. If we use AI for the betterment of the humanity, that would be an advancement. But if we use that same AI in warfare, that would be destruction. And diplomacy has a major role to play in this, equation. So I believe that Pakistan played a huge role where it's beyond imagination that what Pakistan did for, the ceasefire and the shuttle diplomacy. And to ensure the peace between the countries. To ensure that the peace. But the diplomacy was not just between Iran and US. It was in the Middle East, all the states in the Middle East, the European countries and all. European countries with Turkey, with Spain, with Italy, with other countries, UK, and I've been reading a lot on these conflicts and how Pakistan has been, traveling. The high commands of Pakistan has been traveling and just for peace. And this is, I believe, an achievement in modern diplomacy. Okay. And I believe that it is a way for every nation to follow, that we ensure that there is dialogue, there is diplomacy that moves towards peace, and there is peace in the world. And I guess for the betterment of the people of the countries. Yes. Peace is one and for the people, because again, we are serving for the people. We are here for the people. There is conflict in the Middle East, but the whole world is suffering. Yes. Yeah. And there is inflation. Yeah. The prices of commodities is going up. People are suffering a lot. Very true. And this is a global phenomena. It's not an isolated war. So we are so much connected in the world today that one conflict in one region affects the globe as a whole. So we have to ensure that there is peace. And diplomacy has a major role to play. In bridging, in making sure that हर जगह अमन और सुकून रहे, so that it doesn't affect the entire world अगर देखा जाए on so many sub levels. Okay, so diplomacy, I'm sure as a high commissioner आपको गुस्सा आता होगा,
आपको एंजाइटी होती होगी. So healthy lifestyle कैसे? So the question is that if अगर गुस्सा आते हैं, so how do you manage it? A, B, stress होता है, how do you manage it? And C is एक lifestyle है आपका, because it's a very challenging job, right? So how do you manage that? देखिए, इस काम में आपको पता नहीं चलेगा who is targeting you. Oh my God. आपको पता नहीं चलेगा. Okay. Frankly, I'm speaking from my heart. मुझे गुस्सा आता नहीं. गुस्सा पर बहुत काबू रखता हूँ. मगर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और गुस्सा और एंजाइटी को to manage that, मैं गाना गाता हूँ. मैं म्यूजिक सुनता हूँ. जी. So this is the second time today जहाँ पे मुझे डिप्लोमेट कह रहे कि यार मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं म्यूजिक बनाता हूँ. I like to listen music rather than obviously reading is one part. Books हमने recommend कर सकते हैं वो, but this is this is a part जहाँ पे हमें explore करना चाहिए. So कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? What kind of? देखिए, I am a readeraholic. Okay. मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ. I'm from academic, so मैं पढ़ता भी बहुत हूँ. Every week I buy a book. तो एक हफ्ते में मैं पढ़ लेता हूँ. कभी कभी I skip, which is not of my interest. You'll just get a gist of it. But I read a lot. Okay. I read a lot. Okay. And reading also helps me. Yeah. मगर जो म्यूजिक है ना, उसकी बात ही अलग है. और आई एम ए बिग फैन ऑफ किशोर कुमार. Oh my God, yes. आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ किशोर कुमार. तो मैं किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद करता. हालांकि मैं आई ऑल्सो लव टू लिसन टू मोहम्मद रफी साहब, बट किशोर कुमार is on the top. Yes, for me. Yeah. अच्छा सर, since you said कि आप avid reader भी हैं, आप म्यूजिक भी सुनते हैं, so कोई ऐसी बुक, राइट, कोई ऐसी कोटेशन, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में अभी तक है, from the day you began your work अभी तक है, and that inspired you throughout your journey? I was inspired by some quotations of Nelson Mandela, but I'm telling you frankly, I don't know where I read something that remained in my mind, that destroy the mosque, destroy the temple, do not destroy the heart of a man, because this is where God resides. That's beautiful. So this remained, here. तो मेरा फिलॉसफी ये है कि यार, क्या सब लोगों से खुल मिलो, प्यार से, मोहब्बत से पेश आओ, बी ट्रू to yourself, truthful to yourself. So I'm a person that relate to others very easily. तो मेरा ये सब मसला कभी, I do not judge anybody, anyone. और मुझ में छोटा बड़ा ये नहीं, सब इंसान बराबर होते हैं. हाँ, ओहदा बड़ा है तो ये सब एक दिन चला जाएगा. एक दिन चला जाएगा. हम सबको जाना है एक दिन. यहाँ पर सबको छोड़ के जाना है एक दिन. तो अगर ये इंसान समझ जाए ना, तो बग बाइटिंग नहीं होगी, पीछे से वार नहीं होगा, ये सब नहीं होगा. इट इज वी हैव टू लिव बियॉन्ड अबव ऑल दीज थिंग्स. अगर कुछ भी नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेगी सर? वो तो है, वो तो है. पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पीस तो लोगों को बोलेगा कि कोई मसला क्यों नहीं हो रहा, कुछ होना चाहिए. दे नीड द करंट, दे नीड समथिंग. अच्छा, सो व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस क्या है? कामयाबी किसे कहते हैं? It depends. कुछ लोगों को कामयाबी विजुअल से देखना चाहिए. मुझे कामयाबी विजुअल से I've never been interested in, हालांकि मैं I like, always in good looking, अच्छी तरह से मैं अटायर, इसमें मैं बहुत ध्यान देता हूँ. ध्यान नहीं, मेरे let's say that it's my vice. Okay. मैं अल्कोहल पीता नहीं, मैं सिगरेट पीता नहीं. दिस इज माई वे. और मुझे खुशी होती है जब मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, ये सब. फॉर मी सक्सेस इज अबाउट रिलेटिंग टू पीपल. ओके, एंड सक्सेस इज ऑल्सो अबाउट बीइंग यूजफुल टू पीपल. ओके. ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत आला दर्जे पर होते हैं, मगर their subordinates, nobody speaks good on them. Very true. Okay? तो ये सब क्या यार,
अगर दुआएं लोगों के आपके साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाए ना. तो आई एम ए firm believer of this. I believe प्यार करने वाला बंदा. प्यार दो, प्यार लो, प्यार बांटो, जिंदगी आसान करो. तो I love it. I love the mantra. ये बेसिकली एक जिंदगी का मंत्र है अगर देखा जाए. ठीक है. So the very last question is कि second last question would be कि खुशी. What gives you happiness? प्यार बांटना, म्यूजिक सुनना. प्यार बांटना, म्यूजिक सुनना, ये सब. मगर माय फैमिली, आई एम ए फैमिली पर्सन. Okay. आई एम ए फैमिली पर्सन. अगर बीवी बच्चे सामने ना हो तो मुझे एंजाइटी होती है. अच्छा. अगर वो मेरे सामने होती तो सुकून मिलता है. दिल सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. हाँ, तो मेरी खुशी मेरे बच्चों से, माय फैमिली, आई एम वेरी मच अटैच्ड टू देम. और जो लोग मेरे करीब हैं ना, इमीडिएट आपके जाके सर्कल आता है उसमें, उनका बहुत मुझे बहुत फिक्र होता है, बहुत वेल बीइंग. मुझे खुशी लोगों से मिल के होता है, दोस्तों से. कभी कभी जब मैं परेशान होता हूँ तो जब दोस्त मुझसे बात करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो ये सब चला जाता है, दिल को सुकून जैसे मिलता है. तो खुशी इज रिलेटिव. Happiness is relative. So everyone has their own way of seeking happiness, and happiness comes with the peace of mind. अगर आप हमेशा परेशान है, हमेशा स्ट्रेस्ड है, तो हैप्पीनेस का कोई मतलब ही नहीं है. एंड आई गेस अगर कोई चीज आपके सामने हो भी रही होगी ना, आप उससे भी थोड़ा सा इरिटेट होगे कि क्या यार ये क्या हो रहा है, मतलब ना, जब आप यहाँ से नहीं होगे, काम नहीं होगे. बिल्कुल. राइट. सो सर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कन्वर्सेशन, आई विश ये खत्म ना हो बिकॉज मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ. बट लास्ट ये है कि कोई ऐसा मैसेज ऑफ होप, उम्मीद की कोई अगर बात आप हमारे यूथ को करें और बिजनेस कम्युनिटी को भी. देखें in this categories. देखें, for me there is no secret. Okay, आप अपना जगह बनाएं, think big, बड़ा सोचो, बड़ा करो. छोटा सोचने के लिए तो लोग है ना, तो लोगों के बारे में ध्यान मत दो. move ahead. Anything you do it with passion and believe in what you do. Believe in yourself. Believe in your potential and never underestimate the power of words. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे कह डालें, वो हो जाएगी. The world, the nature will conspire to make it happen for you. So I believe that the only way for you is to believe in yourself and believe in your potential and think big. Wow, wonderful. So मैं इस पूरी कन्वर्सेशन को इस पॉइंट पे खत्म करूंगी कि दो चीजें. एक तो यकीन रखिए खुद पे, यू कैन डू एनीथिंग. सेकेंडली, प्यार करो, प्यार बांटो. और कोई भी जिंदगी बहुत छोटी, वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग, राइट. सो रादर देन लोगों के लिए मसले खड़े करने से बेहतर, इट्स बेटर कि लोगों को ईज दो, पर आप मेंटल स्टेट अपना नॉर्मल रखो ताकि आप काम बेहतर कर सको एंड देन आप उसको आउट परफॉर्म कर सको. सो विद दिस नोट, सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे आपका शुक्रिया अदा बहुत मजा आया है. थैंक यू सो मच. आई विश वी कुड हैव द सेकंड version of it, and हम इंशाल्लाह उसको point will discuss it and we'll deep in this. So again, thank you so much, and to the viewers, now this was a very different podcast. ये ambassador नहीं थे, to be very honest. he was educationist, right? So I hope and I pray to explore more people like him, जो कि सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहे, दे आर डूइंग समथिंग एंड दे आर थिंकिंग कि जब वो यहाँ से जाएंगे what people would think about them and what legacy would they leave. So that is a very बारीक लाइन है बहुत ज़्यादा. So we have to think on that, and on this note, I'll see you in the next time, whenever it is. I'll see you in the next podcast. Thank you so much. Thank you.